Check. Hi everyone, welcome back to another live session. ठीक है. You won't believe कि I tried doing this live 2 days before, that is on 6th of September. But हुआ क्या कि after shooting for almost 28 minutes of video and we found out कि जो audio थी वो muted थी, so हमें audio मिली ही नहीं पूरी वीडियो में. So that was one of uncertain activity, वरना ये live 7th या 6th को ही मिल जाती. ठीक है. But it's okay. Let's see if we can go fine today. First of all, let's check if it's live. So everything looks fine. Let me share my window. 1 second. So I hope this is working fine. Okay. We can just cross check. Check. So let's wait for 1 more minute and then by 4:13 or 14 we'll start. Okay. सो यू कैन सी ये जो चीज था ना, ये पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था, बट ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस व्हाट्स द मोटिव ऑफ टुडेज लाइफ. तो सबसे पहले तो आई एम ट्राइंग टू कीप डेली संडेज, लाइक ऑन एवरी संडे वी गोना कीप ऑन लाइव सेशन, जिसके अंदर हम अपने क्यू एन एस, अपने सारे डाउट्स, अपने कुछ इसेंशियल पार्ट्स जो कि मैं इन द वीक वीडियोस में कवर नहीं कर पाया हूँ, या फिर कमेंट सेक्शंस. थैंक यू गाइस फॉर कमेंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. So now we are getting good number of comments, so I want to answer them on my on live sessions. ठीक है. That will be more interactive and also you will find it more like a community feeling. ठीक है. तो वो चीज मुझे build करनी है. ठीक है. This is not something I want to go for temporary basis. ठीक है. This is also a calculation I did in last one. So आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स एंड मोर प्रिसाइजली डेटा क्लीनिंग के बारे में. ठीक है. सो हियर आई हैव अ डेटा सेट दैट इज ऑन अमेजोन से डेटा सेट एंड मैं इसको डाउनलोड करा कैगल से. ठीक है. मेनी ऑफ यू नो आई ऑलरेडी शेयर्ड अबाउट कैगल, बट इफ यू डोंट, कैगल इज एन platform where you can get millions and numbers of data sets. ठीक है. That are structured and more often अनस्ट्रक्चर्ड टू. ठीक है. दैट इज अ पब्लिक विजिट, तो कोई भी उस पर डेटा अपलोड कर सकता है. मोस्ट ऑफ देम आर वेल रिसर्च, सो यू विल फाइंड इट मोर beautiful in terms of number and insights. For example, if you see this data set, it has region, country, item type, sales channels, order priority, order date, shipping date, units sold. So these are different categories जिससे आप different types of insights को cover कर सकते हो. ठीक है. So this is what ब्यूटीफुलनेस इन माई टर्म्स इज. ठीक है. कि जब एक डेटा सेट बहुत सारी चीजों को आंसर कर सकता है, सो दैट इज कंसिडर्ड अ ब्यूटी. ठीक है. नाउ फ्यू बेसिक थिंग्स. ठीक है. डेटा क्लीनिंग आप थ्रू कोडिंग भी कर सकते हो. डेटा क्लीनिंग आप थ्रू एक्सेल या अपना जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसका यूज करो या गूगल शीट्स का यूज करो. सो आइदर यू यूज स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, ठीक है, या टूल्स,
or you go for coding. So for codes, you can go for R and Python. And for spreadsheets, we have the two legendary tools that we can say. And इसमें से सबसे पहले आता है Google Sheets जो मैं ज़्यादा prefer करता हूँ. And the other one we have is Microsoft Excel. ठीक है. कुछ चीजें आपको पहले सीखनी चाहिए डेटा क्लीनिंग या डेटा एनालिसिस से पहले. दैट इज बेसिक्स टू यूज द माइक्रो ऑफिस. ठीक है. ओवरऑल लाइक यू शुड नो हाउ टू डॉक्यूमेंट थिंग्स, यू शुड नो द process of documentation, you should know how to work on Excel, how to use formulas, how to work with pivot tables, and more precisely how you want to know कि आप डेटा में क्या कैलकुलेशन कर सकते हो. All those arithmetic calculations जैसे sum, mean, mode, all that stats जो कि जरूरी होता है किसी भी बेसिक डेटा को समझने के लिए. तो यू शुड बी मोर प्रिसाइज एंड मोर फोकस ऑन दोज फर्स्टली. ठीक है. उसके बाद आप थोड़ा एक लेवल अप जा सकते हो. यू कैन गो फॉर डेटा क्लीनिंग प्रोसेसेस कि आप डेटा करेक्शन कर रहे हो, डेटा डुप्लीकेशन चेक कर रहे हो, क्लीनिंग चेक कर रहे हो, ब्लैंक्स हटा रहे हो, नील वैल्यू फिलअप कर रहे हो. सो दिस आर ऑल द सम मेथड्स जिससे आपका डेटा जो है वो रेडी टू एनालाइज हो जाता है. ठीक है. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन एस्पेक्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग कि the more beautiful data set you have, the more accurate or more precise or more good insight you will get. ठीक है. So people, I see people making mistakes doing data cleaning for 5 minutes and then they're actually going for data visualization tools. Some were like Power BI or Tableau, and then they face problems such as making of columns and then using measures, tax formulas, etc. So अगर आपको उन चीजों को अवॉइड करना है, you can go directly and work those calculations through Google Excel या you can go for max.excel. ठीक है. तो try to do all those initial steps in the sheets only. उससे क्या होता है कि आपका डेटा वेल प्रूफ हो जाता है and you don't need to spend much of time in calculation for tax and other measures. ठीक है. So try that way. And next thing would be formulas, basics, all regarding stats and everything you have to learn. Next you can go is you can learn the text cleanup and other cleaning methods that are possible on each tool. ठीक है. आप गूगल शीट्स की बात करो उसके अलग मेथड्स हैं. आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करो उसके अलग मेथड्स हैं. सो समहाउ जो ओवरऑल टूल यूटिलाइजेशन है वो डिफर करता है. तो you need to focus on a tool, master it, and then move to the second tool. That is the overall thought process you should take on. ठीक है. इट्स नॉट लाइक कि आपने थोड़ा सा डेटा क्लीनिंग सीख लिया, डेटा सा थोड़ा सा आपने विजुअलाइजेशन सीख लिया, थोड़ा सा एक्सेल सीख लिया, थोड़ा सा एसक्यूएल सीख लिया. सो दिस वोंट टेक टू यू सर्टेन असाइनमेंट. और अगर आप चाहोगे कोई आप प्रोजेक्ट करना शुरू कर दो उस पर, तो दिस वोंट बी अ पॉसिबल फॉर यू. ठीक है. तो ट्राई टू get into the depth of any topic. That is the core concept of learning anything. ठीक है. I'm here to tell you what you need to do. I'm also here I to guide you. ठीक है. But the core thing जो आपको intelligent करेगा या the skill you will gain, that is from your practice only. So try to do those things. ठीक है. आप first of all you just write this somewhere, and even when you sit to do that calculation, और अगर आप कोई sheet लेके बैठ रहे हो उसको analyze करने के लिए, so try to do that those steps. ठीक है. सबसे पहले आप कर सकते हो डुप्लीकेसी हटाना, उसके बाद blanks check करना. ठीक है. Then you just do for like data transformation कर सकते हो आप. ठीक है. सो दिस इज सम ऑफ द बेसिक्स. ठीक है. आप इसको एक जितना क्लीन फॉर्मेट दे सको उतना क्लीन फॉर्मेट देने की कोशिश करो. दैट विल मेक यू एंड ऑल्सो द एम्प्लॉय यू आर वर्किंग फॉर, लाइक सपोज कोई क्लाइंट है आपका, तो उसका भी टाइम बचेगा. एंड द टाइम व्हेन यू स्पेंड योरसेल्फ इन गिविंग द स्टोरी टेलिंग थिंग, तो उधर भी आप बहुत ज्यादा अपने आप को सेफ रख सकते हो. एंड देन यू कैन प्रिसाइसली एक्सप्लेन द डीप कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता बेसिकली. ठीक है. So there are formulas. I'll just name them. ठीक है. I have written it down. So smart functions that you can use for text cleanup and standard. ठीक है. उसको standardize करने के लिए आप trim का यूज कर सकते हो. Clean trim का क्या है, इक्वल टू ट्रिम एंड द रेंज. ठीक है. ट्रिम क्या करेगा, इट विल जस्ट रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम दैट सिलेक्टेड सेल. ठीक है. ट्रिम क्लीन अपर कास्ट. ठीक है. लोअर केस, then you have proper substitute, then replace text join, concate. Concate is a very good formula you need to learn. You need to learn
those smart and advanced formulas such as VLOOKUP, XLOOKUP, if you're not punch in or if you're not attach two sheets together and get a dashboard. So these are the formulas you should be focusing on. ठीक है, मैंने आपको import range भी बता रखा है कि आप कैसे दूसरी वर्कबुक को अपने वर्कबुक से लिंक करके उस पर डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, मैंने आपको ये भी बता रखा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द ओवरऑल शीट टू अ डैशबोर्ड. ठीक है, दैट इज more interactive and filled up with chart slicers and a beautiful colored headings. ठीक है, so these are few the things जो कि आपको डेटा क्लीन करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, moving next we can. Sorry guys, actually we got someone in my room. ठीक है, so I forgot where I was. So we can see some of the few things which we can work in this data set. ठीक है, that was the main motive of showing you this Amazon sales data set. So if you remember, the first thing we do is we find out the problem statement, because that is where it shows you the root case कि आप इस route को follow कर रहे होगे, and we will try to avoid everything that is unnecessary in our data set. ठीक है, so try to find the root cause and the root objective of your data set जो कि आप उसपे से find out करना चाहते हो, and you wanna take it to certain level. ठीक है, सपोज फॉर दिस डेटा सेट अगर मुझे ये देखना है कि इस कंट्री के हिसाब से what is the most used item type, या what is the sales channel that is mostly used, या फिर anything like यूनिट प्राइस क्या चल रही है पर कंट्री की, या यूनिट कॉस्ट क्या है, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, टोटल प्रॉफिट, ये दैट इज कैलकुलेटर वन, ये कैलकुलेट कर रखा था मैंने. ठीक है, ऑर्डर आईडी की टोटल वैल्यू क्या है, सो यू जस्ट राइट इक्वल टू वैल्यू. ठीक है, एंड यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस एंड गेट दी वैल्यू. ठीक है, सो दिस आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो कि आप डेटा सेट पे अपने प्रायोरिटी सेट कर लो कि आपको क्या चीजें करनी है. ठीक है, सपोज यू वांट नो जस्ट द टोटल रेवेन्यू एंड द कंट्री, सो एवरीथिंग एल्स इज नॉट ऑफ योर यूज. ठीक है, बट दे आर सम हाउ रेलिवेंट टू द टोटल रेवेन्यू, सो आई वोंट सजेस्ट कि आप उसको डिलीट कर दो. बट सपोज यू डोंट नीड ऑर्डर आईडी, ठीक है, सो जस्ट रिमूव इट. ठीक है, द गुड one would be कि आप उसका एक डुप्लीकेट कॉपी कर लो. You just need to make a right click and you just need to duplicate it, and you can there you can just have the this option and get a sheet जहाँ पे आप चीजों को शॉर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से. ठीक है, so this is how you take this things to certain level and do the basic data analysis. ठीक है, I thought this live would be more aligned to questioning, so but for now let's wind up with the data cleaning process only. Hope to see you in the next video. Thank you so much. Good day.